Hello students, today we will start change of variable in triple integral. Okay, today we will discuss cylindrical coordinate. In next video we discuss spherical coordinate. So change in variable beta using cylindrical coordinate. So beta we make a cylinder x, y axis, x axis and z axis. Make a cylinder beta. Any point P in a region x, y, z. बेटा कोई पॉइंट है x, y, z in a region. We draw perpendicular PM perpendicular to XY plane. बेटा XY plane में perpendicular ड्रा करते हैं. Join OM. OM equal to R. ठीक है. Let OM किस दे इक्वल है R. From M we draw perpendicular. This one angle is theta. Angle XOM की कंसीडर कर लिया बेटा थीटा. ओके. Draw a perpendicular from M to x axis. MQ perpendicular to x axis. Okay beta. So this one is a Z and this one is Y. MQ किस दे इक्वल आ गया बेटा Y. Okay. And this one is X. OQ किस दे इक्वल आ गया बेटा X. क्योंकि from point P draw a perpendicular on XY plane. Then this one is y, x and this one is z. Okay. So point x, y, z तो अपने perpendicular ड्रा किया. PM perpendicular to x, y. OM में कंसीडर कर लिया बेटा R. Okay. Then XOM में की ड्रा किया बेटा perpendicular. Okay. किस दे बेटा x axis पर. Then we say this O Q M. Okay. OQ is x, MQ is y. And this one is R and angle theta between R and OQ. So OQ upon OM, this one is cos theta. So X OM किस दे इक्वल है R cos theta. MQ upon OM equal to sin theta. So MQ कितना बेटा Y R sin theta. सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की हो गया बेटा पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की हो गया बेटा पहले पी एक्स वाई जेड दिस वन इक्वल टू पी आर कोस थीटा आर साइन थीटा एंड जेड. ओके बेटा. सो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गए. देन वी चेंज दिस वन वी एफ एक्स वाई जेड dv किस चेंज करांगे बेटा दिस वन इक्वल टू ओके बेटा दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू पी एफ फंक्शन आर कोस थीटा आर साइन थीटा जेड जैकोबियन डी जेड dr d theta. We find Jacobian बेटा. अपन Jacobian भी find करना है बेटा. So we find Jacobian. बेटा Jacobian क्यों find करते हैं अपन Jacobian is equal to del x y z upon del r theta z. So this one equal to del x upon del r, del x upon del theta, del x upon del z. Del y upon del r, del y upon del theta, del y upon del z, del z upon del r, del z upon del theta, del z upon del z. Okay. This one equal to del x upon del r. X is the equal to beta r cos theta, y r sin theta, z equal to z. Okay. Then dx
del x upon del r, this one is cos theta, del x upon del theta minus r sin theta, and del x upon del z 0, del y upon del r sin theta, del y upon del theta minus r cos theta and 0, del z upon del r 0 0 1, expand beta r3 1 this, so r cos k theta plus r sin k theta, r cos k theta plus sin k theta, then this one equal to r. So Jacobian किस दे इक्वल आ गया बेटा r. So we find this function of r cos theta, r sin theta, z r dz dr d theta. So we start examples. First example बेटा, example 1. Evaluate triple integration v z into x square plus y square dv, where v is equal to x y z such that x square plus y square less than equal to 1 and z lies between 2 and 3. Z lies between 2 and 3. But in this case, z constant ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ cylindrical coordinate. x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ r cos theta, y equal to r sin theta, and putting this one r square less than equal to 1. So beta r 0 to 1. Okay, so beta triple integration z and x square plus y square, x square plus y square, r square dz dr d theta, and z the value lies between 2 and 3, r 0 to 1 and theta, okay, 0 to 2 pi. Okay बेटा, so clear है बेटा, limit z r square dz dr d theta. So first solve dz, z square by 2 to 3 r square dr d theta. So 0 to 2 pi, 0 to 1, z square 9 minus 4 5, okay, r square dr d theta, 5 by 2, 0 to 2 pi, r cube by 3, 0 to 1 d theta. So 5 by 6, 0 to 2 pi d theta, 5 by 6 2 pi, so 5 pi by 3. Okay बेटा, 5 pi by 3. Okay, clear है बेटा पॉइंट. z बेटा देखो z square by 2, okay, z square by 2, then 9 minus 2 4, 9 minus 4 sorry, 9 minus 4, 5 by 2, 0 to 2 pi, 0 to 1, okay, then r cube by 3, r square sorry एक r रह गया बेटा, ओहो, z r square Jacobian r dz dr d theta, so r cube r 4 by 4, okay, so pi by 8, okay, 5 by 8, so 5 pi by 4. Okay beta, so beta first example. Second example beta, second example,
evaluate triple integration, evaluate example second, triple integration x square plus y square dv. Okay, solid bounded by z equal to 0 and z equal to 4 minus root x square plus y square. Okay, solid bounded by z equal to 0, z equal to 4 minus x square plus y square. बेटा put x नु r cos theta, y equal to r sin theta, z equal to z. Okay बेटा, in this case बेटा cylindrical coordinate change कर रहा है बेटा. When in xy plane z equal to 0 we have 4 equal to root x square plus y square, x square plus y square equal to 16. Okay, beta we find limit of z first, triple integration x square plus y square equal to r square is the beta dv, the r dz dr d theta. Okay, first we find the limit of z. Z की लिमिट क्या आ गई बेटा 0 to 4 minus x square plus y square किसके इक्वल है बेटा r square, 4 minus root r square, 4 minus r. क्लियर है बेटा, x square plus y square equal to r square, 4 minus r. Okay, and r की लिमिट कितनी आ गई बेटा r square equal to 16, r की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4. Okay, and सर्कल है सो 0 to 2 pi theta. So बेटा 0 to 2 pi, 0 to 4, 0 to 4 minus r. First 0 to 4 pi, 0 to 4. R क्यूब तो ऐसे इतना बेटा dz दा z 4 minus r d into r cube dr d theta. So we have 0 to 2 pi 4 r cube minus r the power 4 dr limit 0 to 4 r the 4 dr d theta. So we have 0 to 2 pi then 4 r the 4 by 4 minus r the 5 by 5 d theta 0 to 4. Okay, this is. We find 0 to 2 pi r the 4, 256 minus 5, 1024 upon 5. Okay, 4 पुट करता बेटा d theta. ओके बेटा इंटू 5 30 25 दिन 28 2 10 2 12 6 दिन 3 25 दिन 28 and 1024 6 7 5 2. Okay, 4 6 7 2 256. So we have 256 upon 5. Okay beta, into 0 to 2 pi d theta. Okay, so we have 1 2 pi 5 1 2 pi upon 5. So beta इस मेथड में क्वेश्चन करना है. सेकंड एग्जांपल थर्ड बेटा, एग्जांपल थर्ड. Example third beta, evaluate dv. Okay, solid bounded by z equal to 0, x square plus y square equal to 2, x square plus y square equal to 4 and z equal to 4 minus x square plus y square. So we have x, y and z.
So we have this. Okay, first x square plus y square, the second x square plus y square equal to 2. Okay beta, x square plus y square equal to 1 and x square plus y square equal to 4. Z equal to 4 minus x square plus y square. So we find beta first x r cos theta, y r sin theta, and x square plus y square equal to r square. Okay, first beta limit of z की लिमिट की आ गई बेटा 0, 4 माइनस आर स्क्वायर. ओके, dz and r dx dy dr d theta. Then we find the limit of r. Okay, x square plus y square equal to 1, x square plus y square equal to 4. So in xy plane z equal to 0 beta plane दिता हुआ है. Then in xy plane radius अपने आ करना बेटा इस दे विच r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਰੇ 1, ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 2. x square plus y square 2 ਦਾ square, x square plus y square 2 ਦਾ radius कितना है 2. So r equal to 1, r equal to 2. r ਦੀ ਲਿਮਿਟ 1 ਤੋਂ 2 and theta from 0 to 2 pi. Okay beta. So 0 to 2 pi, 1 to 2, r 4 minus r square into r dr d theta. 0 to 2 pi बेटा कितने आ गए 4 r minus r cube dr d theta. So 0 to 2 pi बेटा 4 r square by 2 minus r the 4 by 4 d theta, limit 0 to 1. Okay, first we put 1, then we find is that 2 pi आ जाएगा बेटा d theta का 2 pi into पहला 1 पुट करेंगे बेटा 2 minus 1 by 4. ठीक है, 8 7 2 pi into 7 by 4. So we have 7 pi by 4. So बेटा ये एग्जांपल सी बेटा cylindrical coordinates दियां. In next video we discuss spherical coordinate. Thank you very much.